Hi friends, I'm Simple from Simple Digital School. Today we are going to have another lecture on digital marketing. Since 2020 is coming, in the new year major changes are expected in the SEO. So we'll learn today about Google algorithms and what all major changes are expected in SEO for the year 2020. So let's proceed with the lecture, but before this I would request you to see it till end so that in the end we'll cover up the tips for the year 2020 also. Let's proceed. एल्गोरिदम क्या है पहले हमें पता होना चाहिए बिफोर मूविंग ऑन टू गूगल एल्गोरिदम्स. एक फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, एक काउंटेबल नंबर ऑफ स्टेप्स जो ये डिफाइन करते हैं कि कैसे एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा इन द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स. दैट इज कॉल्ड एज एल्गोरिदम इन अ लेमन टर्म्स. An algorithm defines step-by-step procedure for a computer to perform a specific task. So, हमारा aim क्या है? एक specific task को complete करना. उसे follow करने के लिए step-by-step procedure को define करेंगे हम using a computer language that is called as algorithm. For example, हमें counting करना है 100 to 80 backwards. With the gap of 4s. 100, 96, 92, 88, 84, 80. हमें ये सीरीज डेवलप करनी है with the gap of 4 numbers. ये कैसे होगा? हमें एक कंप्यूटर लैंग्वेज में उसके लिए स्टेप्स को जब हम डिफाइन करेंगे तो वो जो स्टेप्स हमने डिफाइन किए that becomes an algorithm for this particular problem. So next, what are Google algorithms or general algorithm using a simple example. हमने एक सर्च इंजन लिया से गूगल, हमने टाइप किया बेस्ट कोचिंग सेंटर्स इन दिल्ली. आपको बहुत सारे रिजल्ट्स देता है वो, राइट? आपके पास नंबर ऑफ पेजेस आ जाते हैं जिसे हम सर्प कहते हैं. नाउ यहाँ पर ये जो पेजेस हमारे पास रिजल्ट में आते हैं दे आर गिवन बाय एन एल्गोरिदम which decides which results to show you and in which particular order. तो ये एक algorithm पीछे काम कर रहा होता है जो आपको सर्च जो आपने किया बेस्ट कोचिंग सेंटर्स इन दिल्ली उसके रिजल्ट्स को देता है in the form of number of pages. Google has a very complex algorithms for giving search results and it changes frequently as per time. हमारे गूगल के पास बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स है विच आर वर्किंग एट द बैक और जो टाइम टू टाइम चेंज होते हैं एज पर द नीड, राइट? सो आज हम उन बेसिक गूगल एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक्चुअली सर्च पर इफेक्ट करते हैं, जो हमारी एसईओ पर भी इफेक्ट करते हैं. सो व्हाट आर द गूगल एल्गोरिदम्स? Google algorithms does the work by searching on all the web pages which contain the keywords or the text you have written to the search. It firstly assigns a rank to each page based on the several factors such as how many times the keywords appear on a particular page. Higher ranked pages appear further up in the Google's search engine result pages, reflecting that the best links related to your search query are theoretically the first ones in the Google list. What does that mean? जब भी हम सर्च करते हैं किसी भी कीवर्ड पर, राइट? लेट्स गो बैक. फॉर एग्जाम्पल बेस्ट कोचिंग सेंटर्स इन दिल्ली. हमने जब ये टेक्स्ट पे सर्च किया तो अगर हमने इसमें कीवर्ड कहीं पर यूज किया हुआ था बेस्ट कोचिंग सेंटर्स, जिन जिन साइट्स ने ये कीवर्ड यूज किया था तो ये उनको लाएगा और जिनका रैंक भी हायर है, राइट? उन सबको लेकर के आएगा सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के टॉप रैंकिंग में. सो इट वर्क्स एज पर द कीवर्ड्स एंड हाउ मेनी टाइम्स दोज कीवर्ड्स अपीयर ऑन अ पर्टिकुलर पेज और हायर रैंक्ड पेजेस जो होते हैं कितना एसईओ अच्छा है उन पेजेस का उसके बेसिस पर. So, Google algorithms are revised time to time and works in order to give better results and most relevant content for the internet users. So, ultimate goal क्या है Google algorithms का? सबसे ज़रूरी चीज़ कि मेरे यूज़र को बेस्ट रिजल्ट मिले, बेस्ट मैचिंग रिजल्ट मिले. in fact, should be able to get the most relevant content
कॉपिंग अलाउ नहीं करता है। सो गूगल एल्गोरिथम का एक बहुत बड़ा टास्क है कि वो कंटेंट कहीं से भी अगर कॉपीड है किसी भी वेबसाइट पर, उसको वो पकड़ता है, राइट? सो दिस इज द रोल ऑफ गूगल एल्गोरिथम्स. सो गूगल से फर्स्ट इज पांडा एल्गोरिथम विच इज वेरी रिलेवेंट. February 24, 2011 में it was launched. Algorithm reduces the rankings of low quality sites, copy content from the other websites or do not help in value addition to the users. बहुत clearly पांडा algorithm ने बोला कि जो sites ने कहीं से भी कुछ भी data copy किया हुआ है, they are low quality sites because they are not adding value to my users. यूजर नेट पे क्यों सर्च कर रहा है? ताकि उसे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिले, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिले. सो इट इज नॉट सॉल्विंग द पर्पस. सच साइट्स को पांडा एल्गोरिथम अटैक करता है. मोरओवर it provides better rankings for the high quality sites which have original content and information. So वो वेबसाइट्स जिन पे ओरिजिनल कंटेंट है और गुड क्वालिटी का वर्क है, उनको ये हायर रैंकिंग देता है, उनको रिकॉग्निशन देता है. So it motivates people to do the original work, not copying of the work. Penalizing the sites with the poor user experience and gives more priority and ranking to the sites with the positive user experience. So जितना user experience poor है जिन websites का, उनको penalize करने पे it stresses more. Now, because any user wants to find a website with the relevant information and not a website with a bunch of pop-up ads only. कोई भी यूजर ये नहीं चाहता कि मैंने जिस वेबसाइट को ओपन किया, you are getting only ads and ads on that website but no relevant information. Correct? So this is the main point of Panda कि content is the king. Content original हो, copied नहीं हो, यूजर एक्सपीरियंस बहुत ही पॉजिटिव हो वेबसाइट्स का और वैल्यू एडिशन करे यूजर्स के लिए. This is the aim of Panda. Next is Penguin algorithm. It was released in April 2012. Now, what it does? More backlinks for your website, better will be the search engine ranking of your website you will have. Generally, it is said कि जितने ज़्यादा backlinks होंगे मेरी वेबसाइट पर, that is a off-page SEO part, उतनी मेरी वेबसाइट की SEO हायर जाएगी, उतनी रैंकिंग हायर जाएगी. बट पेंगुइन एल्गोरिथम इसी पे काम करता है. इट पेनलाइजेस सच वेबसाइट्स विच चीट बाय परचेजिंग लिंक्स फ्रॉम द लिंक फार्म्स और लिंक एक्सचेंजेस बैक टू देयर वेबसाइट. जितनी वेबसाइट्स लिंक फार्म्स या लिंक एक्सचेंजेस से खरीदती हैं, बाय करती हैं लिंक्स को बाय पेइंग सम अमाउंट ऑफ मनी, दे आर चीटर्स. और उन पे काम करता है पेंगुइन एल्गोरिथम. Now, websites that create links back to the other websites and charge some amount of fee in order to get a higher search engine ranking is called a link farm or link exchange. You are completely safe in case you are not using a paid link. आपने कहीं कुछ पे करके लिंक नहीं खरीदा है और अपने सर्च रिजल्ट्स को आप कहीं भी मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं. Then Penguin will not penalize your site. Next is Pigeon algorithm, which is again important. July 2014 it was launched. Pigeon is supposed to provide preference to the local search results. This is useful for the user and the local business. It stresses कि जो हमारी first search है that should be on the local business. Local search results पे ये ज़्यादा emphasis देता है. This algorithm has a location and distance as a key parts of the search strategy. The local directory listing gets preferences in the web results. सबसे पहले local directory listing के ऊपर काम करता है, right? Why? To improve the quality of local searches and provide more relevant search to the user in the nearby areas. Google relies on the factors such as location and distance through the Pigeon algorithm. Hummingbird algorithm is based on hummingbird name, which is very fast bird. So it works very fast. It has the ability to quickly analyze longer, more complex questions and provide the best answer to the searcher with the fewest possible clicks. बहुत थोड़े क्लिक्स में बेस्ट पॉसिबल आंसर को प्रोवाइड करता है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस का, कॉम्प्लेक्स सर्चेस का आंसर देता है. इट
works more on a human way to interact with the users and provide a more direct answer. Unlike its previous versions of Panda and Penguin, it is better than earlier versions. Google got improved its understanding of search queries, even long tail search, and therefore knowing the user better, the entire query and the relations of the word groups within the search queries can be increasingly targeted. What does it mean? कि मेरे गूगल के ऊपर जब भी हम लॉन्ग टेल सर्च को टाइप करेंगे, कुछ लॉन्ग सर्च करेंगे, तो वो यूज़र क्या चाहता है उससे इजीली अंडरस्टैंड कर सके और रिलेशंस ऑफ वर्ड ग्रुप्स को वो बेटर समझ सके. The hummingbird improvements not only up to the matching words but also works particularly strong in contextual and conversational search identified and interpreted. What does that mean? ये सिर्फ वर्ड्स को ही मैच नहीं करता है बट उन वर्ड्स को हम किस कंटेक्स्ट में यूज कर रहे हैं और कॉन्वर्सेशनल सर्च पर काम करता है ताकि उन सर्चेस को हम बेटर आइडेंटिफाई कर सके, इंटरप्रेट कर सके गूगल और उसका रिजल्ट दे सके. Fred algorithm. Again, this is a very good algorithm which works upon the link quality. How? एक वेबसाइट है जिसके ऊपर सारी एडवर्टीजमेंट्स ही एडवर्टीजमेंट्स हैं. Such a website will be targeted by Fred. Those websites which use over advertisements are targeted by Fred. Fred works to attack such sites which give low priority to the content and aimed to collect extra revenue only. जो वेबसाइट्स ये टारगेट करती हैं कि मेरे पास सिर्फ एडवर्टीजमेंट्स हो और मुझे उससे एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट हो जाए, बट डू नॉट फोकस ऑन द कंटेंट. उनका जो कंटेंट है वेबसाइट का दैट कम्स आउट टू बी ऑफ लो प्रायोरिटी. सच साइट्स आर अटैक्ड बाय द फ्रेड एल्गोरिथम, राइट? इसीलिए फर्स्टली इट वाज सेड कंटेंट इज द किंग. Fred gave chance to all such websites to grow which have a high quality content and works for the value addition to its customers. ये बहुत ज़रूरी पार्ट है कि कस्टमर को उसका वैल्यू इंफॉर्मेशन मिले और हाई क्वालिटी का कंटेंट मिले. ये काम किया फ्रेड ने. Mobilegeddon, very good algorithm. Why it was required? Today everyone is using a mobile. Most of us open up the websites and most of the pages on the mobiles. So mobile friendliness को introduce किया Mobilegeddon algorithm ने. It was a correct decision for the Google to adapt to customer behavior or the consumer behavior and trends in the market. Market का trend था mobile friendly बनना जो Google ने adapt किया through the Mobilegeddon algorithm. क्यों चाहिए था? To provide the best experience possible to the people so that people should keep clicking on the websites. अगर एक बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा यूजर को ऑन द मोबाइल then only people will keep on clicking on the mobile also. To improve the page speed on the mobile so that it loads faster, Mobilegeddon worked. It says कि हर वेबसाइट के ऊपर मोबाइल फ्रेंडलीनेस होना बहुत ज़रूरी है. It affects majorly on the search rankings on the mobile devices and it was a big push to the people to be more mobile friendly. Now coming to one of the very important topic, what are the major changes in SEO for 2020? What we can see now. क्या नया आने वाला है? Number 1, Google is going to be competing more heavily with Amazon. कैसे? Google has already declared in 2019 that Google will already be working on, or it has already started working on, by releasing a buy on Google feature. What it does, Google Shopping app is available. Buy on Google feature, it allows people to buy e-commerce products online directly from the Google Now or say Google Shopping. Simply Google Shopping कीजिए, best offers, best prices it is giving in competition to Amazon today. Right? So this is one of the major challenge in 2020. Next, more people are going to get the information
that they need through the rich snippets. What are the snippets? Snippets are the major part of on-page SEO, which we'll be learning in the further lectures. Snippets के through maximum information will be available to the user. Now snippet देखते ही user को पता चल जाएगा this website is of my use or not. So snippets have to be improved. Otherwise people will not click on your websites or go into the deeper insights of your website. So these are all the major challenges for 2020. अब इन सबको माइंड में रखकर और गूगल एल्गोस को माइंड में रखकर we have to work upon the SEO in 2020. What all we can do to improvise SEO in 2020? Let's have a glance on this. So coming to tips for year 2020. Number 1. Become a master at uncovering search intent. That is, work upon your keywords. Why this? Keywords को use करना is not enough. Look at the competitors of yours. Look at the questions which people type while searching and work upon the keywords accordingly so that you can master at uncovering search intent. कि what user is looking forward to search. User का intent क्या है? While searching, what exactly the user wants. So work upon the keywords. Number 2, write the compelling titles. For your every web page, titles have to be very, very important so that people click through your listings more and more. So again, use the keywords in your title the competitor is not using. Try out those keywords and write the amazing meta descriptions that people want to click through and read. This is most important so that people click through your listings. Again, meta descriptions play very important role in the on-page SEO, and people want to know more and more about your products, your services through the meta descriptions. So write them carefully, write them amazingly, work upon the same, and click through, read through it can be increased. So these are the tips for 2020. Today we have covered all the Google algorithms. How do they work? Little bit about all algorithms so that we can see actually where we can improvise keeping in mind the Google algorithms. And then we have seen what all major changes are expected in 2020 and the tips for the same to improve the SEO. In the next lectures, we'll be coming up with much better things in the future. Till then, bye-bye.